Hello friends, how are you? Hope you are doing very well. आज की जो क्लास लेके हम लोग आ रहे हैं that is on about how to improve your communication skills. Means some points which are very much important while you are trying to present yourself and trying to make your communication proper. Which are these points that we are going to learn today? So let's start with first point and that is our body language. बॉडी लैंग्वेज ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है. व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज मुझे नए तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, कैसे हम लोगों ने उसको अडाप्ट करना है, किस तरीके से हम लोगों ने अपने बॉडी को मूव करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ट्राई भी कर चुके हैं. तो सबसे बड़ा रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन का, मीन्स कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का. So how we can improve our body language, because it is all about a non-verbal communication. While we are trying to send some message to the another person, if we are not going to keep our body proper or we are not going to make some movements of our body proper, तो कोई wrong message वहाँ तक सामने तक जा सकता है. So it's all about the non-verbal communication. The way you carry yourself is the first impression you give to people whom you are going to be communicate with. While you are trying to show by your gestures, by your posture, by your body movement, you are just trying to send something from your side. And that is the unseen message which is going from your side to the another person just because of your body movement. Therefore, read up on all the aspects people notice in body language and make changes. While you are going to move your body, while you are going to talk in that manner, while you are going to say something and you are not utilizing your proper body language, so people are also not trying to take the interest in your talk. Don't slouch while you are trying to talk with someone. Don't make your slouchy type of appearance. स्लाउच मीन्स से झुका हुआ है या फिर ये कह सकते हैं ढीला ढीला है. नो 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 दैट सॉर्ट ऑफ. डोंट टेक नेगेटिव स्टांसेस. कीप शोल्डर्स इन एन ओपन स्टांस एंड मेक आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट के ऊपर इसके पहले भी हम लोग कॉलेजेस में बहुत बार बात कर चुके हैं. कोई हीरो अपनी हीरोइन से जब बात करता है, मेरी आंखों में देखो, कुछ नज़र आ रहा है, मैं तुम्हारे दिल में उतरना चाहता हूँ. तो इसी के ऊपर बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, आँखों से दिल में कैसे उतरा जाता है. सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर लिमिटेड अप टू द मूवीज, इट्स अ फैक्ट. सपोज यू फील दैट यू वांट टू कम इनसाइड द हार्ट ऑफ दैट पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग विथ, तो उसके लिए आई कॉन्टैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. बहुत बार आई कांटेक्ट में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती हैं कि सर हम लोग आई कांटेक्ट अगर बनाने की कोशिश करें तो बहुत बार एक अलग सा फील दिमाग के अंदर आता है. इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के. Some such type of little things will go far in making your body language positive and receptive. So suppose you feel that you want to make your proper communication, keep your body language proper. इसी के ऊपर हम लोग एक पूरा पीपीटी पढ़ेंगे आगे चल के. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, टू द पॉइंट. व्हाइल वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन, जस्ट ट्राई टू टॉक अप टू द पॉइंट. वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मिसकम्युनिकेशन इज वेस्टिंग टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट गेटिंग टू द पॉइंट. When you are one communicating, keep it short, simple and to the point. बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग किसी बात को जो कहना चाहते हैं वो उसको नहीं कहते. आजू बाजू की बहुत सारी बातें हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या हो जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है. सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि व्हाट डू यू वांट टू से. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, बी अप टू द पॉइंट. Don't beat around the bush wasting time. People will also appreciate your concern for their time.
बिकॉज आपका टाइम, आप बहुत बार बहुत लंबी बातें करते हैं तो आपका टाइम शायद आपके लिए उतना कीमती ना हो, बट लोगों को अपना टाइम बहुत ज़्यादा कीमती लगता है, तो उनके टाइम को कीमत देते हुए जस्ट ट्राई टू टॉक अप टू द पॉइंट. So just get to the point in a direct yet in polite manner. With practice, this will become your natural way of communication. Up to the point जब आप बोलना start करेंगे, it will show that you are on the natural point of communication. And the third point is going to say, listen. आपको अगर ये बोला जाए तो कि क्या आप हर एक व्यक्ति को बहुत सही तरीके से सुनते हो, तो एग्जैक्टली आप कहेंगे हाँ सुनते हैं. आई एम सेइंग नो, नहीं सुनते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू हियर दैट पर्सन, नॉट लिसन. सो देर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. तो लेट्स चेक व्हाट इज लिसनिंग फर्स्ट. कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग हर्ड, it is also about listening to the other person. So learn to listen and pay attention to what they are saying. Once they know they have your undivided attention, they will do the same for you. They will also listen to you, creating an uninterrupted channel of communication. But how will you try to show that you are listening? आवाज़ें तो बहुत आती हैं, दैट वी आर हियरिंग, बट उस आवाज़ में से कौन सी चीज़ को हमें सुनना है, समझना है, दैट वी विल ट्राई टू शो विथ आवर बॉडी लैंग्वेज बाय नॉड्स. सपोज समवन इज गोइंग टू टॉक विथ यू, हैव यू अंडरस्टूड, एंड यू आर जस्ट वॉचिंग एट हिम एंड यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू आर लिसनिंग हिम, बट यू आर नॉट रिप्लाइंग, इट मीन दैट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर जस्ट हियरिंग. So try to show the nods. जब हम लोग उसको nods देते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज से रिप्लाई करते हैं, यस, हाँ, ये जो रिप्लाईज होते हैं, सपोज यू आर ट्राइंग टू शो टू हिम व्हाइल ही इज ट्राइंग टू टॉक विथ यू, he will try to keep the interest to talk with you because he will understand that you are listening carefully to him. A fourth point is reading. To be an excellent communicator, you also need to have good knowledge. Knowledge होगा तो ही तो शेयर कर पाएंगे ना. And for this, you need to read. Don't just be knowledgeable about communication. Know about other stuff too. Especially in working environment. Why? Because there are number of people, those who are having number of thoughts in their number of minds. They are going to keep some thoughts, they are trying to keep some interest in front of you while you are going to talk with them. And if suppose you are unable to say something or anything on that particular point on which he is trying to discuss with you, how we can say that you are a good communicator? So that is the reason that you should have a lot of stuff with you. It will develop just by the habit of your reading habit. Know all about your company and industry they operate, along with some useful general knowledge. That is also must that we should have with us, because most of the times we are going to discuss on any such type of a current affair, and suppose you are unable to talk on it, what will happen? The communication is going to be stopped there. That person will just talk with you and you will just try to hear, or if suppose you are having interest, you will try to listen. But if you are not having that much of interest, because you are not habitual to read, habitual to keep good knowledge with you, due to that reason, communication may hang there. So you will be surprised how many people will come to you for help and discussions if suppose you are having a good knowledge of books, or general knowledge, or say current affairs, or you are a good reader. So dear friends, try to be a good reader. Our fifth point is discussion. Communication is never one way. You know better. One person is talking with you, you are trying to listen him, it means that it's a two-way process.
So communication is never one way, it has to be going both ways. So don't be the one who is always talking, let the other person talk as well. This is also a good point over here. I just would like to discuss with you. Suppose आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आप ही बात कर रहे हो, आप ही बात करते जा रहे हो, what will happen? Do you think that that person will listen you carefully? No. Please give him also chance to talk something with you, because he just want to clear himself. He's also having some points in his mind related to that topic on which you are going to discuss with him. So let him discuss with you, let him talk with you, because it's a two-way already. I talked to you. It's a two-way process. If other person is not talkative, you can coax them into communicating by asking some general questions. Maybe sometimes it happens that the person to whom you are going to talk something is not that much of a talkative type of personality. So what you have to do, you just have to pour the interest in that particular speech, whatever you are discussing. Pour the interest, ask some questions to him. What will happen? He will try to participate in that communication. It's a two-way process. It's a two-way process. Just you are talking and he is listening. It's not a communication. So you just have to ask some questions to him, that person who is not that much of talkative. Once they get talking, there will be good back and forth, and it will be a proper communication channel. जब कभी ऐसा होगा ना कि वो व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश तब करेगा जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डाल देंगे, तो ये टू वे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अदरवाइज यू आर जस्ट टॉकिंग 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 एंड दैट पर्सन इज जस्ट हियरिंग, नॉट लिसनिंग. फर्स्टली मे बी ही मे लिसन यू, बट कितनी देर तक? So discuss. The next point is related with the respect. While you are trying to speak something, whatever topic you are entered in, just try to keep that in mind कि हमें जो भी बात बोलनी है, जिसके बारे में भी बोलनी है, रिस्पेक्ट के साथ बोलनी है. बहुत से लोगों को सुना है, while they are going to talk something, they are just forgetting the respect and they start their talk. So be respectful, be it verbal or non-verbal communication. Always be respectful of everyone involved, those who are involved in your talk. Even if the other person is being rude or condescending, it's up to you to be a good person and continue communication respectfully. बहुत बार टॉक में ऐसा होता है, while we are teaching to the engineering colleges at that time, for the group discussions, most of the times we are keeping students seated and giving them time for the GD, 10 minutes time. We are watching that sometimes any person who is not agree with another one point, so that time he is just trying to come on the debate. No, in that debate what is going to happen? We are just going to forget that we are seated here for group discussion, not the debate. So keep the respect while you are going to talk with anyone or anybody. This will most likely win over the person. Even if it doesn't, you will get practice of being a good respectful person. Just try to show the respect from your talk. If suppose you are talking about politics, many times we have heard many words, but वहाँ पर भी हम लोग रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, ज़रूरी होता है. इससे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है. ओके, गलत कर रहा है, आपने थोड़ी देखा है, आपने तो सिर्फ पेपर में पढ़ा हुआ है. रिलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स. बट हर व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू. They will think that he always try to keep the respect of other people. So be respectful always in communication. Our 7th point, know your audience. सबसे important point है. हम किसके सामने बात कर रहे हैं, हमें क्या बात करनी है,
और किस वे में बात करनी है। सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और उनको अगर आप गीता या रामायण या महाभारत अगर पढ़ा रहे हैं, will they understand? Will they participate in it? Of course, they will participate. But how type of way you are utilizing in your communication, how type of way they will understand, you will have to use that way. उनको उनके तरीके से आपको समझाना पड़ेगा. So due to that reason, you should know what is your audience. Of course, there is a basic way of communicating with most people, but when you want your communication to evolve, you have to know your audience. Read them, know beat about them, and know the right way to talk to them. For example, if you are talking to someone junior to you and who is seeking advice, your tone will be different as opposed to when talking with a senior. ऐसा होगा ना? If you are talking with your junior, तो आपका टोन कैसा होगा? If you are talking with your senior, तो आपका टोन कैसा होगा? दोनों टाइप में keep the respect and you should know to whom you are talking with. The situation is the same, yet the person is different, and that makes all the difference. So always keep in mind, know your audience properly, to whom you are telling and in what manner you are going to tell. Next point, repeat your key communication. Though you have to be to the point, you still have to repeat the key aspect of your communication to ensure the other person gets it. Start your communication with the key aspect and also end your communication with the key aspect. This way the other person will retain important information better. Whatever the key aspect you are having with you, that must be shown by your talk, so that this person will understand what exactly you want to say, and he will get that information in a proper manner. Next point, get feedback. How will you know if you don't get feedback? Get feedback from your friends and the people, those who are being in contact with you at that time while you are going to talk with them. If they have noticed a difference in your communication skills, just try to take the feedback from them. Also ask them for pointers and tips on how to be better. कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आपने कुछ रिस्पेक्टलेस कोई चीज़ बोल दी, शायद आपके टॉक में से कोई गलत चीज़ बाहर निकली हुई है, क्या हुआ ऐसा? तो ये फीडबैक लेना ज़रूरी है. क्यों? Because on the basis of that feedback only you can make changes in your way of communication. People who know you are the best people to give you the advice on improvement. जिन लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है वो आपके फ्रेंड सर्कल में से हो. Ask them where you are committing mistake. With the help of that, you can make some improvement. So get feedback. And the next point, keep working on it. Making use of the tips provided just a few times is not going to make a difference. आपको किसी ने कोई टिप दे दिया कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो बस आपने उतना ही कर लिया तो फिनिश, अब मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है. नो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. यू हैव टू कीप वर्किंग दैम ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस. रिपीट करते रहिए, बिकॉज इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर किसी ने आपको आपकी गलती बता दी, आपको लग रहा है कि यस आपने अपने आप में वो चेंज कर लिया, एग्जैक्टली कर लिया, बट जो आपका मूल स्वभाव होता है वो अपनी आदत को चेंज नहीं करता है. सो इन द फर्स्ट, जब किसी ने आपको बता दिया उसके बाद आपने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि यस अभी मेरा टॉक चेंज हो चुका है. नो, अपने आप को एक मिरर प्रैक्टिस दीजिए एंड जस्ट ट्राई टू चेक कि जिस किसी ने आपको वो गलती बताई थी कि आपके कम्युनिकेशन में ये आपका मिस्टेक हमें नज़र आया था, तो इस मिस्टेक के ऊपर आप कितना ओवरकम कर चुके हैं, ये चेक करने के लिए आपको मिरर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. जस्ट ट्राई टू मेक इन दैट वे.
You have to keep working on them constantly. If you do this, being an excellent communicator will become a part of nature without you even realizing it. And it will happen just if you are keeping working on it. So don't live. If suppose you think that somewhere you have committed a mistake, just work on it. Don't stop. And the final words which I just would like to discuss here: beat your personal life of professional. Good communication skills are the key to do well. Therefore, read the information, whatever we have learned. Read that information, listen carefully, then try to express yourself properly in a proper body language. Try to take the advice of people, try to take the feedbacks from people. And if suppose you are trying to take the advice from the people, just try to improve on it, all form of these communications. In that way you can make your communication well. Whatever your age, you can work on your communication skills and become an excellent communicator. दोस्तों, excellent communicator होने के लिए कहीं कोई क्लासेस ज्वाइन करना है तो हम लोग एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है. We have seen 10 points. जस्ट रीडिंग का हैबिट डालिए. हर दिन कुछ ना कुछ मैंने रीड करना है, ये प्रैक्टिस अगर आप करते जाएंगे, व्हाट विल हैपन? जस्ट विद द हेल्प ऑफ रीडिंग यू आर गोइंग टू कलेक्ट द वोकैबुलरी. जितना ज़्यादा वोकैबुलरी आपके पास होगा, उतना आप बहुत सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, चाहे आप इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, या मराठी में बोले, या किसी और अलग लैंग्वेज में बोले, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास शब्द ही नहीं रहते हैं. If suppose we are not having that type of vocabulary, तो our communication is going to be stuck there. Don't stop. Suppose you think yourself that you are unable to speak in that particular language, in what language that person is going to talk with you, and he is understanding your language. Just start with your Hindi, start with your Marathi, but don't stop. Communication को कोई stop नहीं करना है. Communication का मतलब ये नहीं होता है कि पर्टिकुलरली आप इंग्लिश में ही बात करें, हिंदी में ही बात करें, मराठी में बात करें, गुजराती में बात करें. नो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप बात करें, बट कम्युनिकेशन करते वक्त उस प्रोसेस में जो रिसीवर को आप अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, क्या उस तक वो सही तरीके से पहुंचा है या नहीं. उसको पहुंचाने के लिए मुझे किस तरीके से अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना आई कांटेक्ट, अपना बॉडी मूवमेंट, अपना जेस्चर, पोस्चर, expressions, emotions, the way of talking, how spiritually you are trying to talk, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है. So language is not a barrier. So दोस्तों, आज जो बात हम लोगों ने कम्युनिकेशन के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके ऊपर 10 टिप्स देखी हैं. इसका ज़रूर उपयोग कीजिएगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा. और हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, एंड द स्किल, इफ सपोज यू आर हैविंग दैट स्किल, तो वी कैन थिंक अबाउट योर करियर ऑफ टुमारो. स्किल है तो कल. ऑल द बेस्ट.